Welcome back, guys. How are you doing? And we will continue with our series of learning about indicators. अभी हमने 4 parts में RSI को conclude किया है. अब हम चलते हैं next part पे, which is going to be MACD. तो MACD basically क्या होता है कि this is moving average divergence and convergence, right? Moving averages कैसे diverge और converge कर रही हैं, that is actually seen through the MACD. और MACD बेसिकली इज अ ट्रेंड एग्जॉशन. अगर उससे जो बहुत बढ़िया तरीके से हम पता लगा सकते हैं वो पता लगा सकते हैं ट्रेंड एग्जॉशन. कहाँ पे जाके ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया है. अगर सपोज एक स्टॉक नीचे जा रहा है, कहाँ पे जाके वो स्टॉक का गिरना एग्जॉस्ट हो गया है, या सपोज एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, कहाँ पे जाके स्टॉक का अप टॉप डिफाइन हो गया है, राइट? वो आप MACD से बहुत अच्छी तरीके से पता लगा सकते हो. एटलीस्ट यू नो, again as I'm telling you, I'm not suggesting option buying with that, but option selling can be a very good idea. So अब today I'm going to talk about MACD, but next video में मैं MACD और RSI दोनों को combine करके आपको बताऊंगी. because उसमें क्या होगा, when you combine two indicators you see a clear trend exhaustion, right? When you see the clear trend exhaustion, combine it with candlestick pattern and you will get a very beautiful reversal pattern. So the today's part is going to be MACD, and I'm going to just explain you with the help of my screen and how do you find out trend exhaustion, how do you find out markup, markdown and trend exhaustion. That also we will discuss on the graph. So let's go to the screen and start our work. Hi guys, तो बात करते हैं MACD की, राइट? एक सिंपल सा इंडिकेटर है टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे जाके ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया है. सिंपल, राइट? उसमें और कुछ नहीं आपको पता लगेगा, ये भी नहीं पता लगेगा कि टॉप है कि बॉटम है. यू विल सिंपली गेट टू नो कि ट्रेंड एग्जॉस्ट हुआ है कि नहीं. तो इस बात को समझने से पहले व्हाट आई वुड लाइक टू से कि हम क्या करेंगे कि ग्राफ्स को थोड़ा सा समझते हैं. व्हाट हैपेंस इन अ ग्राफ, राइट? What happens in the just a sec. So here this is called markup, right? What do you call it? Markup. Matlab when price is going up on a continuous basis, this is markup. This is markdown, right? Markup means लोग अपनी long positions build up कर रहे हैं. जब हम FNO stock की बात कर रहे हैं तो उसमें लोग buy के साइड में खड़े हुए हैं, right? और ये मार्क डाउन होता है या इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, राइट? लोग अपनी शॉर्ट की पोजीशंस को इंक्रीज करते जाते हैं. व्हाट हैपेंस बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट, राइट? कुछ लोग ने जिन्होंने लॉन्ग बाय कर रखे होते हैं स्टॉक, वो उनको एग्जिट करते हैं, लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट करते हैं. शॉर्ट नहीं बिल्ड करते हैं, अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट करते हैं. और इसी बात को देख के कि एक मार्केट में टॉप आ गया है, कुछ लोग जो है अपनी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करते हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड जो FNO स्टॉक्स में, FNOs में लाइक फ्यूचर्स जो होते हैं बेसिकली आप हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब फ्यूचर्स को आप हेज करने के लिए यूज करते हो. सपोज मैंने कोई भी स्टॉक खरीद रखा है, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है आई विल बी होल्डिंग माई पोजिशंस. बट यहाँ जाके जब मार्केट एग्जॉस्ट हो गया, मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करना चाहती हूँ, बट स्टिल मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आएगा एंड आई डोंट वांट टू लूज मनी, तो मैं क्या करूंगी, उसका फ्यूचर सेल कर दूंगी. दैट्स कॉल्ड हेजिंग. बाय की पोजीशन मैंने खड़ी की हुई है और मैंने उसका कॉन्ट्रा पोजीशन खड़ा कर दिया बाय सेलिंग द फ्यूचर्स. दैट्स कॉल्ड हेजिंग. तो यहाँ पे जाते क्या होता है, कई लोग अपनी कैश की पोजीशंस एग्जिट करने लगते हैं इस जगह पे आके. सो दिस प्लेस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? यहाँ पे आके प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है. और वंस डिस्ट्रीब्यूशन गेट्स ओवर, मार्केट स्टार्ट्स गोइंग डाउन. इट्स कॉल्ड मार्क डाउन. ये जगह है जहाँ पे गिरते गिरते प्राइस को लगता है, लोगों को लगता है कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है. इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन. यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है. कभी ये पीरियड बहुत लंबा भी होता है, राइट? इट्स अ वेरी लॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन. और उसके बाद मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप, राइट? अगेन मार्कअप. सो अगर हम बात करें FNO फ्यूचर्स की, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहे हैं, यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, यहाँ शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रहे हैं. सिंपल, राइट? लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट अनवाइंडिंग, राइट? और इसको बोलते हैं मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन, and this is consolidation, right? Hope you have understood this.
सो इस पोजीशन को हाउ डू वी गेट टू नो कि अब डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन हो रहा है, उस जगह को कहते हैं ट्रेंड एग्जॉशन, और उस जगह को निकालने के लिए हम क्या इंडिकेटर यूज करते हैं, MACD, राइट? So I'm going to take you to MACD and then we'll be able to find out what is happening, right? So I'm going to just remove all the drawings and we'll go to the indicators and we'll put moving average. No, sorry, we'll put MACD, right? Where is MACD? This is MACD, right? I'm going to remove moving averages. So here I'm going to close it. Now, you see, what do you see at the bottom? You see two moving averages. One of them is running faster. This blue one is running faster. And this yellow one is running slowly, right? एक जगह जाके दोनों कन्वर्ज होती हैं, फिर डाइवर्ज होती हैं, then कन्वर्ज, लाइक दोनों आके पास मिलती हैं, फिर दोनों दूर जाती हैं. So क्रॉस ओवर भी बोल सकते हो आप. जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ. ब्लू ने ऑरेंज को नीचे से ऊपर काटा है, ब्लू ने ऊपर से नीचे की तरफ काटा है, राइट? तो जहां पे ये मिलती है इस जगह को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग. जहां पे ये दोनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो जगह को हम बोलते हैं, वहां पे MACD क्रॉस होता है और ट्रेंड एग्जॉस्ट होता है, राइट? दैट प्लेस इज बेसिकली कॉल्ड द प्लेस ऑफ ट्रेंड एग्जॉशन, राइट? जहां पे मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर हो रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड एग्जॉशन, राइट? MACD हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए नहीं यूज करते हैं, MACD हम यूज करते हैं ट्रेंड एग्जॉशन के लिए. यहाँ पे आप देखो ट्रेंड आके एग्जॉस्ट हो रहा है एंड मूविंग एवरेजेस आर ऑलमोस्ट लाइक क्रॉसिंग ईच अदर. सी हियर. सो जितना क्लियर क्रॉस ओवर होगा उतना बेटर आपको ट्रीट मिलेगा. रिमेंबर दैट यहाँ पे क्रॉस ओवर बहुत बढ़िया नहीं था, राइट? तो वो क्रॉस ओवर फिर ऊपर गया फिर नीचे गया. Here you see a beautiful divergence and then crossover. Divergence means दोनों moving averages के बीच में बहुत ज़्यादा difference था. I'll just highlight it so that you can see it easily. यहाँ पे आप देखो बहुत ज़बरदस्त दोनों के बीच में difference था between blue and the orange line. And look at how market has fallen after that, right? I'll just draw the line for you, the region for you here. This is the place, and here this is the place, right? Crossover of MACD and exhaustion of the price. Uske baad market has just fallen down, right? So but again I'm telling you, MACD is not a very strong sign. It is a sign of exhaustion or some accumulation or distribution, but it's not a sign of continuation, right? So and then you must notice there is a zero line. Sometimes the crossover takes below zero, sometimes crossover takes above zero, sometimes crossover takes on this. It's not much of significance. What matters is the distance between these moving averages, right? See here, beautifully converged and then crossed over, right? Beautifully converged and then crossed over. But then it did go up, but not as much as we could have thought that it will go up, right? बहुत ज़्यादा opening है, कुछ 200 points का move आया यहाँ पे, but again double bottom and after that it has gone up, right? So again, no indicator is a holy grail. Please remember that. Nothing that you can say is 100% sure shot. So there will be some aberrations, there will be some kind of, but at least something that you can understand. Why am I educating you people? Because अगर आप देखते हो इस तरह का कोई क्रॉसओवर हो रहा है, आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हो. जैसे मैं एक ट्रेड आपको बताती हूँ रिलायंस का. लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस की. अगर सपोज मेरे पास रिलायंस की पोजीशंस है, राइट? मैंने रिलायंस को बाय कर रखा है, किसी भी तरीके से बाय कर रखा है, फ्यूचर्स में बाय कर रखा है, या मैं बाय करना चाहती हूँ. So see here, beautiful divergence has happened between the two. The two moving averages have crossed over each other, and just look for a reversal candlestick pattern. Combine it with RSI. I've already explained you RSI, and then you can go for a long, right? You can go for a buy, right? इसी तरह यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, राइट? ब्लू लाइन ऊपर से ऑरेंज को क्रॉस कर रही है. यहाँ पे आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है. अगर आपके पास फ्यूचर्स के लॉट है, यू कैन जस्ट एग्जिट योर पोजीशन. और अगर आप कैश में रिलायंस को होल्ड करते हो, यहाँ पे आप इसके
कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो, ब्यूटीफुल ट्रेड्स विल कम अप, राइट? So that is the significance of MACD. MACD is simply, it reflects the trend exhaustion. Crossover of MACD tells you the trend exhaustion. There's not any other information, just simple trend exhaustion, right? So crossover पे ही concentrate करेंगे and वहां से हमको जैसे ये वाला ट्रेड देख रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है. See here, so you can go to any time frame, you can go anywhere. I'm just going to highlight it for you. Any stock you can pick up. This is where the crossover is taking place, right? Get alerted कि अब मुझे अपनी position को book करना है, right? See here, trend exhaustion, double top, and see after that stock has come down. You can sell it call option, you can buy its put, or you can just simply hedge your position, right? This is how you will be able to use technicals to derive the maximum benefit, right? So I hope it's making sense to you, MACD. But what I'm going to do in the next video, I'm going to combine RSI and MACD and the candlestick pattern to get the bang on trade, right? So with this, I'll be signing off and see you in the next video. Keep liking, keep sharing, and keep subscribing to the channel, because I think we need your support a lot, right? We need your support a lot, because a lot of people are looking for education in stock market, and the best way to get it, come to my channel and you will find some free stock free education, right? There is not you don't need to pay anything. I've made almost like 800 videos, and this is going to help you in understanding and learning about stock market. So take care, see you, and take care of your family and take care of your health. Bye bye.